दिस इज़ योर होस्ट फहाद मशेक। यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क पीएचडी तक का सफ़र रहा, किन किन मुश्किलात का आपने सामना किया। So the story is kind of typical actually. तो देखा जाता है कि जो लोग मैथ्स करते हैं या मैथ्स कर रहे होते हैं उनके दरमियान एक मैथ फोबिया पाया जाता है। वो मैथमेटिक्स। There are several perspectives जिससे बात की जा सकती है. सो मच सर, सच अ कॉम्प्रिहेंसिव आंसर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे हमारे ऑडियंस और तमाम वो प्रोफेशनल जो मैथ्स से रिलेटेड हैं मुस्तफ़ीज़ होंगे कि वो क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेशन देती है, मोटिवेट रखता है। क्योंकि आपने जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती है वो आप जैसे बच्चे हैं पब्लिक की तरफ से एक सवाल है कि अगर डॉक्टर जावेद साहब के लिए अजूम किया जाए कि वो मैथमेटिक्स प्रोफेशनल में ना होते तो वो खुद को किस प्रोफेशन में देखना चाहते हैं। तो सर इसी असना में मैं चाहूँगा कि अगर आप कोई चंद एक आध शेर हमारी ऑडियंस की नज़र करना चाहें। For example, 1 + 1 = 2, whether you like it or not. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you. एंड हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। Assalamu alaikum. Welcome back to another exciting episode of Campus Chronicles powered by Public Speaking and Literary Club. This is your host फहाद मशेक। आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो ना सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान में एक मायनाज हस्ती रखती हैं। मेरी मुराद सक्कर IBA यूनिवर्सिटी की शान, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की जान, हर दिल अजीज़, मेरे फेवरेट, हमारे उस्ताद, हमारे मेंटोर डॉक्टर जावेद हुसैन ब्रोही साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? Sir, thank you so much for your time. Sir, before we dive into our detailed discussion, मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को अपनी तालीमी जर्नी के हवाले से बताइए कि कैसे सिंध शालतीफ़ यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क PhD तक का सफ़र रहा, किन किन मुश्किलात का आपने सामना किया और कैसे उन पर काबू पाया। So the story is kind of typical actually. मैं when I was in matric actually, there was a guy जिन्होंने अब्दुल रशीद जामरी साहब, always thankful to him actually that कि जिन्होंने पहली बार ये आइडेंटिफाई किया और मुझे कहा कि आप मैथ पढ़ें. I don't know what he saw. I didn't realize actually at that time that कि मुझे क्या करना चाहिए. He said that कि आप मैथ पढ़ें and then वो बात दिमाग में बैठ गई and I started doing maths. शालतीफ़ यूनिवर्सिटी में अंडरग्रेड किया. बैचलर लाइब्रेरी जाने का बहुत शौक़ होता था. स्पेशली लाइब्रेरी खैरपुर में एक सचल लाइब्रेरी है. दैन वहाँ एक पोर्शन है मैथमेटिक्स का बड़ा सा. जिसमें जो है वो बड़ी नेशनल इंटरनेशनल बुक्स जो हैं मैथमेटिक्स पे अवेलेबल होती थी. तो उस वक्त मैं सोचा करता था यार ये तो कोई अंग्रेज़ों के पढ़ने की किताबें हैं, हमारे बस की बात नहीं है कि हम इन किताबों को पढ़ सकें और समझ सकें. So one day I was, reading a book on topology, and one guy sat near to me, and then he said that, "कि यार तुम क्या पढ़ रहे हो? Topology पढ़ रहा हूँ." And then he said to me that कि अच्छा लगता है तुम्हें मैथ का शौक़ है, मैथ का शौक़ है. And he said me to go to VII University, Islamabad, and then I took his suggestion, and I went to VII University. I did masters and MPhil from there. वहाँ ट्रेडिशनली दो ही किस्म के मैथमेटिक्स पर बड़ा एम्फेसिस होता था, फ्लूइड मैकेनिक्स और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा. ठीक है. So I learned both of the skills, but then I realized that everyone is doing it actually, so I must do something different. I didn't knew at that time कि मुझे क्या करना चाहिए. In 2010 I joined Sukkur IBA University as lecturer, and then here I was given an opportunity to teach a course on financial mathematics, and I thought that कि यार ये कोर्स बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे कैलकुलस या कोई लीनियर अलजेब्रा की एप्लीकेशंस हो and so on and so forth. But it turns out that it was a completely new world for me actually. that कि यार ये कौन सा मैथमेटिक्स है which is theoretical, which I really like, and at the same time it's applied actually. So I became instantly become fond of it. Then I decided कि इसी में जो है आगे बढ़ना है. उन्हीं दिनों जो है scholarships आई हुई थी HSC की, applied and I got one. Then I did a master's again in a mathematical finance. ठीक है. And then I realized there that math finance जो है वो तो it's a canal from a
bigger river, Yes. which is called stochastic analysis. Yes. Then I did my PhD in stochastic analysis, specifically stochastic partial differential equations. Yeah, so that's how I reached from Kharpur Luqman to University of York. So that's a short journey. Yeah. वंडरफुल सर, वंडरफुल जर्नी। सर हमारी ऑडियंस के लिए आप आसान अल्फाज में बता सकते हैं कि आपकी पीएचडी या आपकी स्पेशलिटी है क्या और वो काम किस तरीके से करती है? So दो एरियाज हैं जिनमें इंटरेस्ट हूँ मैं। एक फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट दैट कि अगर if I really want to summarize it actually, that कि अगर आप if you want to make an investment actually, then an investor would like to make investment in such a way that he must be exposed to a lesser risk and more returns and more profits actually. So financial math is basically a set of recipes to do that. Yes. Okay, that's one way to deal with the financial math. Stochastic analysis में क्या मैंने किया, let me give you just an analogy, okay, a rough analogy. Let's imagine a sphere actually. फर्ज कर दें आप एक sphere assume करें, and let's imagine that there is a particle or object sitting on a sphere, and you put that object into the motion. Yes. Okay. So one problem that I solved during my PhD was that if you under what conditions this particle is going to stick onto the sphere for all the times in such a way that it never leaves the sphere. Okay. ठीक है. That was one problem. इसे हम कहते हैं invariance of manifold. Yes. And then the other problem that I did was that कि जी अच्छा अब assume करें कि यही particle move तो कर रहा है but it's jiggles actually. Okay. तो उसका motion जो है ना jiggling है, तो फिर हम ये कहेंगे कि under what conditions the same particle who is jiggling onto the sphere would stay on sphere, okay, for all times. So that was the second problem that I solved. There was another third problem, which is about large deviations, but that will become too technical if I get into the details of it. Yeah. थैंक यू सो मच, बहुत ही उम्दा अंदाज में आपने एक्सप्लेन किया। सर अब मेरा सवाल मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। आमतौर पर देखा जाता है कि जो लोग मैथ्स करते हैं या मैथ्स कर रहे होते हैं उनके दरमियान एक मैथ फोबिया पाया जाता है। वो मैथमेटिक्स को एक निहायत ही खौफनाक चीज़ या हमन्नक टाइप का समझते हैं। तो सर ऐसे लोगों को आप क्या गाइड करेंगे, क्या नज़रिया उनको देंगे कि मैथ्स को वो किस लेंस से देखें? Alright, so there are several perspectives जिससे बात की जा सकती है। One of the way is to basically look at from the global perspective. ठीक है, यानी एक अगर फर्ज कीजिए आप एक zigzag puzzle के अंदर हैं, ठीक है, और आप you want to solve that puzzle actually, from within puzzle शायद उससे solve करना मुश्किल हो, but अगर आप ऊपर से देखें तो you can easily find a way to basically go from one place to another place. बिल्कुल इसी तरीके से मैथ को भी देखा जा सकता है। दो छोटे से रिमार्क, एक ये आई एम रियली फॉन्ड ऑफ, यानी मैथमेटिक्स जस्ट इज अ वे टू हाउ टू लर्न द थिंग्स एक्चुअली। इट्स अ वे टू हाउ टू लर्न द थिंग्स, ठीक है। जब आप मैथ सीख रहे होते हैं, आप न सिर्फ मैथ सीख रहे होते हैं बल्कि ये भी सीख रहे होते हैं कि मैथ के अलावा अगर दूसरी चीज़ों को आप इनकाउंटर करते हैं तो उनको कैसे सीखा जाए, ठीक है। I really like something called classical education model, यानी वो 7 forms of thought हम उसे कहते हैं। 3 includes 3 is called trivium actually, grammar, logic, rhetoric. यानी आप imagine कीजिए एक Venn diagram कि जिसमें you have grammar. So grammar doesn't mean English grammar. Grammar means that set of collection of facts, definitions and so on and so forth. यानी किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसकी ग्रामर सीखना ज़रूरी है। यानी ये सीखना ज़रूरी है सबसे पहले बुनियादी तौर पर कि इसमें बुनियादी definitions क्या हैं, facts क्या हैं, and then the second circle that you need to assume is what you call logic actually. That कि अगर आपके पास दो propositions given हैं, दो facts given हैं, तो क्या आप उनसे तीसरा deduce कर सकते हैं? And the third aspect is rhetoric, okay, that how you communicate
those facts Those actually. facts. ठीक है? And really the wisdom lies at the intersection of all three. Yes. ठीक है? So that's trivium. Classical education में this was an important aspect actually जो सिखाया जाता था. And once you learn trivium, then you have something called varium actually, that you learn about number. Classically ये पढ़ाया जाता था. You learn about something called numbers, and then geometry, which is like numbers in space. And then music actually. Yes. Music was essential part of the training, which is like numbers in time and interval. And then astronomy, which is like the numbers in motion. ठीक है? तो classically ये 7 skills सिखाए जाते थे. इसलिए सिखाए जाते थे कि once you master these, इसका मतलब है कि अब आपने सीख लिया है patterns को recognize करना in nature actually. And one of the fundamental purpose that math serves is that it's it's the pattern recognition. Patterns in finance is financial mathematics. Patterns in heavens is cosmology. Astronomy, yes. And so on and so forth. The patterns in biology is mathematical biology, and so on and so forth. So the maths is not just ये समझना जरूरी है कि maths is not just maths, but it's a way to learn things. Yes. ठीक है? मुश्किल क्या होती है? आपकी तरफ आते हैं कि मुश्किल क्या होती है बच्चों को? The key thing is that people are stuck in processes actually. ठीक है? For example, let me give you an analogy. Numbers हैं, so we learn numbers from the very basic. यानी एक और अजीब सी बात आप ऑब्जर्व करेंगे that कि अब दूसरे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते बिल्कुल बेस से. When you go to the kindergarten, you either learn language or maths actually. Yes. I mean, why you learn maths from the very early? Chemistry नहीं पढ़ाई जाती, biology, physics नहीं पढ़ाई जाती, numbers क्यों पढ़ाए जाते हैं? I mean, the reason is that maths and mathematical skills are the things that can only be learned over the time actually. Like they are like when you do maths, like you are building your mental muscles. ठीक है? तो जैसे body जो है, you can't just make it in one day. Yes. ठीक है? Or 6 months actually. You need to work gradually onto them. The same is the case. Math भी language की तरह है, जो gradually आप सीखते हैं through experience and so on and so forth. तो math को as a language देखें, math को as a way to learn देखें. And then I give few advices. For example, I know that I'm taking time, but I want to speak over this. That the first thing is to realize आप कोई भी subject पढ़ रहे हैं math का, for example, you're learning calculus actually, ठीक है? और आप computer science के students and you want to do calculus. तो पहली चीज़ जो मेरी नज़र में आपको करनी चाहिए वो ये है कि आप ये देखें कि how the calculus is connected to your area actually. यानी क्यों एक computer scientist को calculus पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है? Once you realize that के यार देखो, I can't learn algorithms of machine learning and AI and data science and, for example, search engines and all that until I learn calculus. So once you have a objective, यार ये काम की चीज़ है, ठीक है? Like अगर मैं ये सीखूंगा तभी मैं इन चीज़ों तक access कर सकता हूँ. Otherwise, I can't access all this. So when you learn with objective, ठीक है, आपको एंड रिजल्ट आपको पता है कि आप कहाँ पहुंचेंगे, तो फिर आपके में एनर्जी होती है. फिर आप कोशिश करते हैं कि नहीं यार चले जितना भी मुश्किल हो, बट आई वांट टू गो थ्रू इट सो दैट आई कैन रीच माय गोल. सो पहली चीज ये कि आप जरूर ये देखें कि व्हाट आर द कनेक्शन, और स्टे इन्फॉर्म्ड. दैट्स द की थिंग. सेकंड थिंग इज आई वुड से solving of what do you call exercises. Doing exercises is an important actually thing. ठीक है? अभी I hope कि आप सब ने गेम खेली होगी. There is something called Subway Surfers or Temple Run and so on and so forth. So ऐसी हम बचपन में वो स्नेक गेम खेलते थे. ठीक है? When you play the snake game in hard level, वो हार्ड लेवल जब खेलते हैं और उसकी आदत आपको हो जाती है, then you अगर आप लोअर लेवल की चीजें खेलें तो फिर आपके लिए वो बहुत आसान होता है. Sometimes boring हो जाता है. ठीक है? The same is the case that when you are trying to do your problem set that is given to you, try to attack the hard problems first that you think. Okay, I know that you're gonna उसमें आपको defeat होगी, मुश्किल होगी, but
उस मुश्किल, वो जो मुश्किल है वो आपके मेंटल मसल्स इतने बिल्ड कर देगी कि व्हेन यू विल अटैक द अदर प्रॉब्लम्स व्हिच आर you can do them easily. Yes, sir. Okay, so that's one of the things that I would like to seek help. This is also important. You can don't suffer in silence. मुश्किल होती है तो डिस्कस करें. This is also an important thing. When you want to solve a difficult problem, solve a simple problem first. ठीक है, प्रॉब्लम को ब्रेक करें पार्ट्स में, because all these are the strategies basically that you can use to develop your problem solving skills in any area actually. और दूसरी चीज ये भी important है finally that के each subject, for example calculus में आप बहुत सारी definitions पढ़ेंगे, facts पढ़ेंगे and theorems and आप पढ़ेंगे सीखेंगे, ठीक है, बट वो सारी बिल्ट हैं एक और बेसिक नॉलेज पर. फॉर एग्जांपल उससे पहले आपको अलजबरा आना चाहिए, आपको नंबर्स आने चाहिए. मेक श्योर दैट कि यू आर गुड एट अलजबरा, मेक श्योर दैट यू आर गुड एट नंबर्स एंड देयर लॉज एंड फैक्ट्स एंड रूल्स. उस पर बेस करते हुए व्हेन यू विल डू कैलकुलस यू कैन डू इट बेटर. बट अगर आप डायरेक्टली कैलकुलस करने की कोशिश करेंगे विदाउट ऑल दीज फाउंडेशंस, थिंग्स विल बिकम डिफिकल्ट. तो असल में हकीकतन मुश्किल बच्चों को इसीलिए होती है कि दे डोंट केयर फॉर द फाउंडेशंस के जिस पर चीज़ें बिल्ड की गई. थैंक यू सो मच सर, सच अ कॉम्प्रिहेंसिव आंसर. और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे हमारे ऑडियंस और तमाम वो प्रोफेशनल्स जो मैथ्स से रिलेटेड हैं मुस्तफीज होंगे. सर अब मैं आपसे चंद ज़ाती नौइयत के सवालात करना चाहूँगा कि जिसमें सर फहरिस्त ये सवाल कि वो क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेशन देती है, मोटिवेट रखता है. क्योंकि हमने हाल ही में देखा कि आप एक मेजर सर्जरी से गुजरे और उसके चंद ही माह बाद आप IBA में वापस आए और हमारे दरमियान टीचिंग आपने दोबारा से शुरू की. और रिसेंटली आपने फेबिनाची सेलिब्रेशन डे पर आपने क्या उम्दा अंदाज और निहायती ग्राउंड लेवल पर आकर ट्रोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को आवाम को समझाया. तो सर क्या आपको मोटिवेट करता है या इतना ज़्यादा मोटिवेशन का राज क्या है? अभी दो बुनियादी एस्पेक्ट्स हैं. अगर मैं मैथ्स ना करूं और जो काम मुझे पसंद है वो ना करूं तो शायद मैं जी ना पाऊं. that's one of the fundamental thing. बुनियादी चीज. That's one of the thing. The second thing I would say that जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती है वो आप जैसे बच्चे हैं जिनको जब मैं देखता हूँ कि they are full of potential, they they are not any less than students from developed countries. ठीक है, वहाँ भी पढ़ने पढ़ाने का मौका मिला है. यकीन कीजिए वो उनके सर पे सींग नहीं होते. They are the people like us actually. They are the kids like you and they are वो जो अच्छा सोच लेते हैं, जो ना इन्वेंट करते हैं, जो so like you young people are the motivation that के इनको गाइड किया जाए. वो कमियां जो कि अगर आप मुझसे क्रिटिक पूछेंगे फॉर एग्जांपल थ्रू द एजुकेशन सिस्टम दैट आई वेंट थ्रू, मैं आपको बहुत सारी बातें बता दूंगा कि कौन सी कमियां कमजोरियां थी. मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों में दोज हु आर ट्रेनिंग थ्रू अस, उनमें वो कमजोरियां जो हैं वो ना हों. स्टिल व्हेन दे विल गो इन फ्यूचर वो हमारी ट्रेनिंग में भी कमजोरियां उनको मिलेंगी, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. दिस इज व्हाट द बेस्ट वी कैन डू with the trainings that we are trying to give you. थैंक यू सो मच सर. आपकी शख्सियत हमारे लिए मशअल्लाह है. अल्लाह पाक आपको सलामत रखे. इसी असना में सर मेरा दूसरा सवाल यह है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और अपने इंटरेस्ट को किस तरीके से मैनेज करते हैं, या अगर मैं इसको इस तरीके से पूछूं कि आप क्या सजेस्ट करेंगे वर्क लाइफ बैलेंस के हवाले से? So I mean personally I'm a very messy guy, I'm not an organized person. I'm still trying to learn things that how to balance out things, but I would say that कि हर शख्स को especially हर professional को जो पढ़ लिख रहा है, जो रिसर्च कर रहा है, जो काम कर रहा है, like there are like he must be a juggler actually, and he need to juggle between three things. 3 balls हैं जिनके दरमियान आपको juggle करना है. The first thing is your health. Your health is one of the key important factor actually. ठीक है. दूसरा आपकी family है, and the third is the work actually. ठीक है. So sometimes we emphasize too much on work and we don't care of our health
and we don't give time to the family. So when you feel that you're not taking care of your health, आपका वजन बढ़ रहा है, you're not doing well, then juggle actually and spend time on health actually. Yes, sir. ठीक है, and then juggle and spend time with family, because that's what that's what kind of like all these things makes us human. ये हमें इंसान बनाती हैं, ठीक है. We are not just mathematicians and programmers and educationists, and so there's a human aspect. We need to be connected with each other, and that's important actually, that we need to spend some quality time with our friends and family. I try my best to have some time for my kids. अब मैंने कोशिश की है शुरू करना कि मैं बच्चों को टाइम दूं, and I'm trying my best. But if you'll ask for my wife, she'll not be happy with the way things are going on. थैंक यू सर. सर अब मैं कुछ ऑडियंस डिमांड क्वेश्चंस की तरफ जाना चाहूँगा, जिसमें सर फहरिस्त ये कि बीइंग अ मैथमेटिशियंस हम काफ़ी चीज़ों को अज्यूम करके चलते हैं. तो पब्लिक की तरफ से एक सवाल है कि अगर डॉक्टर जावेद साहब के लिए अज्यूम किया जाए कि वो मैथमेटिक्स प्रोफेशनल में ना होते, तो वो खुद को किस प्रोफेशन में देखना चाहते हैं? I would love to be a librarian actually. Library would be मैं एक छोटा सा क्लर्क होता है, ऐसा शख्स होता है जिसका काम जो है ना, वो फॉर एग्जांपल साफ सफाई करना हो किताबों की, जिसके पास ढेर सारा किताबों का खजाना हो, और जिसके पास वक्त ही वक्त हो, और वो लाइब्रेरी की भी खिदमत कर सके और किताबें पढ़ सके. So I would love to be a librarian actually if I would not be a mathematician. बहुत खूब सर. सर दूसरा सवाल मेरा ये कि मैं ये जानना चाहूँगा कि डॉक्टर जावेद साहब अपना फारिग वक्त किस तरीके से स्पेंड करते हैं? क्या आपकी कोई हॉबीज़ हैं, या आप किसी मूवीज़ को लाइक करते हैं, पोइट्री, बुक, फिल्म? अभी बहुत सारी चीज़ें. कोशिश तो मेरी ये होती है कि जो वक्त मेरे पास हो तो मैं पढ़ूं, देखूं, समझूं. स्पेशली आई spend a lot of time on improving my teaching style. तो ढेर सारी चीज़ें जो हैं वो उस पर्सपेक्टिव से मैं देखता हूँ दैट कि अगर मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ, पिछली दफ़ा जो पढ़ाया था, इस दफ़े उससे किस तरह से डिफरेंट से पढ़ा सकूँ. I spend time on creating visualizations for students actually, that कि कैसे visualize किया जाए मैथ्स को. We are visual beings actually. We are visual beings. We are visual species. We love to see the abstract ideas into on a more of a visual way. So I spend time on that. Movies भी देख लेते हैं. Sherlock Holmes is my favorite. I really. So शायरी जो है वो तो बचपन से पसंद है. अदब, फ़लसफ़ा जो है वो भी I try to spend time on reading books, but उससे ज़्यादा मैं सुनना पसंद करता हूँ अच्छे फ़लसफ़ियों को, because if you are reading for example a book, I mean you can spend time on reading book, for example a hardcore philosophy book, but at the end you will realize that कि आपने जो समझा है इसकी क्या गारंटी है कि जो समझा है वो ठीक समझा है, ठीक है. So it's better to listen to the people who have invested their life, say for example understanding that philosophy. तो फिर जब वो आपको समझाते हैं वो फ़लसफ़ा, तो बहुत थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा आपको वो समझा पाते हैं. तो I spend a lot of time on listening to the top people in philosophy of all kind of areas. बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल ढकी छुपी बात नहीं है. हमने चंद दिन पहले इकबाल डे में भी आपको देखा कि क्या निहायती उम्दा अंदाज में आपने इकबाल का तसव्वुर खुदा और खुदी से रिलेटेड बात की थी. तो सर इसी असना में मैं चाहूँगा कि अगर आप कोई चंद एक आध शेर हमारी ऑडियंस की नज़र करना चाहें. शेर चले जी, बहुत शेर हैं, शेर तो बहुत हैं. तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाज़िर व मौजूद से बेजार करे. So, like it has an important message actually. I mean, if you are satisfied with yourself and with your surroundings, I mean, something is wrong with you. Yes. Okay? You shouldn't be satisfied ever, in a sense that
you will always find areas of improvement on yourself, in your society, in the environment around you. So you need to always think about, how to develop your area. This is an important thing. हाज़िर व मौजूद से बेदार करें। बेशक सर अब मैं एक ऐसे सवाल की तरफ बढ़ना चाहूँगा जो हर सोचने वाला, हर मैथमेटिक्स करने वाला, हर जानने वाले के जहन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं आया होता है। वो ये कि कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। थोड़ी देर पहले भी आपने इस बात का जिक्र किया। तो क्या आप इस बात में बिलीव करते हैं कि मैथमेटिक्स ज़ाती तौर पे इंसान की सोच से आज़ादाराना तौर पर एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, या इट इज़ जस्ट द इन्वेंशन और मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन थॉट्स? I mean, it's a long standing debate actually. इसमें ऐसा समझ लें कि बड़ी बहुत इसमें people have different kind of ideas actually. People are Platonic actually, जो कि ये समझते हैं कि math, for example, like Roger Penrose is one of the big example, जो समझते हैं कि mathematics और जो mathematical objects हैं, they exist in some Platonic manner out there beyond yes. this universe, yes. and so on and so forth. And there are other people who just deny completely that. They think that yes. math is ये हमारा तख़य्युल है, ये हमारा एक सोचने का तरीक़ा है जो हमने इन्वेंट किया है. While I believe that it's both actually. वो नेचर में भी एग्जिस्ट करता है. I mean, there are things that are independent of your what do you call choices and free will and all that. It's like, for example, 1 + 1 = 2. Yes. Whether you like it or not, that's true. It is true. For example, if you take a circle, आप एक circle लें, and then you take the diameter of it, you take the ratio of both, you'll always get one number. अब वो circle जो है वो भले एक छोटा सा circle हो, like electron orbiting in a orbiting in a circle around, say for example nucleus, या एक सर्किल ले लें जिसमें फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम दैट कि हम एक सर्किल में, वैसे इट्स नॉट सर्किल, लेट्स अज्यूम दैट वी आर रोटेटिंग अराउंड व्हाट डू यू कॉल सन. ठीक है, दिस फैक्ट इज ट्रू दैट you take the circumference of it, divided by that diameter of it, so you always get one symbol, one number actually, pi. Well, this exists. It is there, but there are things that we create, what do you call, out of our mind too actually. Okay, in बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हमने तख्लीक की हैं. For example, this conflict of gravity. Physics में एक fundamental conflict है that the gravity is not compatible with quantum mechanics. ठीक है, so like this has led people to develop, like Ed Witten, to develop a great deal of completely new mathematics actually. Yes. Okay. More mathematics is coming out of people's head. So there are tons of math which comes out of people's head, and there is tons of maths that is out there actually. So I think being in the middle is my opinion. Yes, sir. Thank you so much for answering such a beautiful manner. सर अब मैं जानना चाहूँगा कि आप मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के HOD भी रहे हैं और अभी मौजूदा तौर पर आप एज एन एसोसिएट प्रोफेसर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं. आप मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट को सक्कर IBA के किस तरह देखते हैं और आइंदा 5 से 10 सालों में क्या देखते हैं मैथमेटिक्स के बारे में? I would say I'm happy but not satisfied, as I always say. There are tons of things that you can improve. I'm happy in the sense that कि हम जो mathematics कर रहे हैं और करवा रहे हैं, it's not only modern math. यानी fundamentally जो mathematics का curriculum है undergrad का, वो 4 pillars पर मुश्तमिल है, algebra, analysis, geometry and topology. हमने उसमें एक 5वां element add किया, that is computing. Yes. No, computing was the element जो कि हमारी training में missing था, and we suffered a lot because of that. So हमने उस 5वें pillar को, अब computing is also a kind of a
skill that evolves over the time actually. Yes. So पहले semester से लेकर 8वें semester तक kids go through this computing courses or the maths based on the computing courses. That's what makes us unique. Another thing is that कि हमें जो बुनियादी मैथ पढ़ाना है वो पहले 5 सेमेस्टर में पढ़ा देते हैं और उसके बाद फिर we leave students to choose whatever they want actually. So people chooses the courses from finance and physics and they can choose computer science, machine learning, data science. So we have given the freedom actually, and this is important, that people should be given foundations and then freedom. The courses should not be forced on to the people actually. Yes, sir. Okay, pure math is not a piece of cake of everyone actually. Yes, sir. ठीक है, तो जो करना चाहता है वो करे, जो mentally prepared है उसको करने के लिए, not everyone should be forced. So that's what one of the things that makes us unique. Computing पे focus है, freedom है, and तीसरी important चीज that I think we try to do is the mentoring of students actually. Yes. कोशिश करते हैं, बहुत सारा वक्त देते हैं बच्चों की mentoring पर. अब हमारे अगर 8th semester के बच्चों से और masters के बच्चों से मिलेंगे तो no one is going to aspire to become a teacher actually. हम ये नहीं कहते कि उन्हें, I mean teaching is bad, but like we push them to basically say to do the basic math. We have done and now do whatever you want to like actually. You can go in physics, you can go in biology, you can go in any area you like actually based on that. अगले 5 साल में कहाँ देखना चाहता हूँ? I want to see mathematics department and we are trying for it inshallah, and you will see soon that we will sow the seeds of this in next 5 years, is that we want to make Department of Mathematics at Sukkur IBA University as a center of excellence in mathematics with AI and data science actually. Wow. So this is what is one of our focus actually, that कि हम math के साथ जो है वो AI और data science को develop करें. I mean, if you really see all of the we कुछ अर्सा पहले was learning some deep learning algorithms actually, deep learning algorithms, and I was following some lectures, and lectures में जो है the instructor was just doing maths actually, saying like, okay, if that's deep learning, that what is the difference between deep learning and maths? Yes. It's all algorithms are manifested in this language of math actually. So there is a deeper connection between both. So we want to go for that in next 5 years. Yeah. Inshallah, sir, mathematics Inshallah. department will shine forever. Sir, in the last, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि how do you feel about this podcast series, and is there anything जो मैंने आपसे ना पूछी और आप शेयर करना चाहते हो? I think you guys are doing well. You guys are doing well. And when I saw this idea of podcast by Rashid and his team, and the members of Public Speaking Society, so I was really happy in a sense that this is a step towards bringing people together. एक दूसरे की बातें सुनने समझने की opportunity है. Yes. Otherwise, everyone is sitting in their pigeonholes, and Yes. हर शख्स जो है यहाँ बैठा अपना काम कर रहा है. But like with this podcast, I think people get an opportunity that what is and how hardworking and beautiful people are sitting around your campus actually, and you don't know that इतने मजे के लोग आपके campus में बैठे हैं. So I think this is a good opportunity to do that. I would suggest कि इसमें आप students को opportunities दें, teachers को, बाहर से भी आप लोग जो हैं noteworthy within Pakistan, आप उनके साथ कर सकते हैं podcast. I think it's a good initiative. It's really good initiative. So we kept your suggestions, and thank you so much for your time. Thank you. And हमने बहुत ज़्यादा enjoy किया और बहुत कुछ सीखने को मिला, और मुझे उम्मीद है कि हमारी नाजरीन ने भी
इससे बहुत कुछ सीखा होगा और ये पॉडकास्ट उनके लिए एक मेमोरेबल और enjoyable पॉडकास्ट रही होगी। विद दिस योर होस्ट फहाद अहमद शेख साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड विद कैंपस क्रॉनिकल्स। अल्लाह हाफिज।